Hello and welcome back to Excelsior Academy. So in this session, I'm going to talk about the latest about the ACTRIC JRF 2021 online exam, and this is for the PhD course in the life sciences. So I'm going to discuss like what are the eligibility criteria of the applicants, whether you really need to write the ACTRIC entrance exam, or if you have got the CSR exam, then how you should apply and everything. सो इसमें मैं पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ, और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में अगर आप एक्सेलसियर एकेडमी के नाम से ढूंढेंगे तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। सो आई एम ऑल्सो देयर वर्किंग एट एक्ट्रिक, सो स्टिल इफ एनी डाउट्स आर देयर यू कैन अप्रोच मी। सो just let's go through what all information is important to know about it. Okay, so ACTRIC exam, this is for the PhD JRF 2021 online exam. So this is what you need to apply now as soon as possible. So this is for the JRF award and it is going to be at the Tata Memorial Center. So ये हम बात कर रहे हैं जो मुंबई में प्रेजेंट है। सो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये डिटेल्स है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना पैसा आपको मिलेगा एज इन द फॉर्म ऑफ द स्टाइपेंड और द सैलरी, एंड किस तरह से अप्लाई करना है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। So what it is? So the Tata Memorial Center is actually an autonomous grant in aid institution of the Department of Atomic Energy. So Tata Memorial Center के दो पार्ट हैं, ACTRIC और TMH. So ACTRIC stands for Advanced Center for Treatment, Research and Education in Cancer. तो यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च वर्क होते हैं, यहाँ पर ही क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से आप सैंपल लेकर आते हो और ACTRIC में आके उस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि दोनों फंक्शनिंग बॉडीज डिफरेंट है, बोथ आर टुगेदर ओनली एंड वर्किंग टुगेदर. So ACTRIC conducts PhD program in life science, which is affiliated to Homi Bhabha National Institute (HBNI), which comes under the category A by the MHRD Government of India. So basically आप जरूरी नहीं है कि आप CSR क्लियर करें एंड रिसर्च के लिए जाएं, तो आप ACTRIC में भी PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ACTRIC खुद का एक एग्जाम कंडक्ट करता है, अगर आपके पास CSR है तो भी आप डायरेक्टली ACTRIC आ सकते हैं। So ongoing research at TMC consists of basic and also translation research in cancer biology. So नाम से ही आपको पता चलता है कि mainly यहाँ पे कैंसर पे ही काम होते हैं, let it be skin cancer, leukemia or oral cancer. So it can be of any kind of cancer and different approach in order to solve the conditions. So यहाँ पे हम drug designing भी करते हैं. We also try to find out like what is the reason behind that particular cause of the cancer. Okay. Now, किस तरह के research interests are there? So the specific areas includes are the cell proliferation, cellular differentiation. There is a lab which totally works upon the apoptosis, metastasis, tumor immunology, molecular imaging, carcinogenesis, stem cell biology, biophysics, structural biology, bioinformatics, proteomics, genomics, genetics, epigenetics, and pharmacology. So these are different labs are there. Like for example, there is a lab called Chilkapati lab is there, where they make use of the Raman spectroscopy in order to study the proteins and the various aspects of the cancer. Then you have got the Saurabh Dalal lab is there, who is also working on different kinds of proteins like PKP3, 1433 proteins, which are involved in the desmosomal. Those are the desmosomal proteins. Again, if something goes wrong with these desmosomal proteins, what happens? Eventually, it leads to cancer, right? Then the Prasanna lab is there. So they work on the biophysical aspects. You have got the Ashok Verma lab. They work on the structural biology aspects. So like that, many labs are there. Amit Datta lab is there. Sarin lab is there. Then Wagmare sir is also there. So there are different labs. So according to your research interest, you can approach them once you qualify the ACTRIC exam, or you get enlisted if you have got the CSR or DBT fellowship. So now let's talk about the qualification. So आपके पास अगर MSc है, which is like any biology or biochemistry, bioinformatics, अगर आप क्लियर है, आप इवन इफ इट इज एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स अगर है, जस्ट दैट आपका एग्रीगेट परसेंटेज जो है 55% से ऊपर होना चाहिए. ओके, ऐसा नहीं है अगर इफ यू आर लाइक MSc फर्स्ट ईयर देन प्लीज डोंट अप्लाई, you can apply next year. Okay, so these if you're there in the third semester, sorry, if you're there in the fourth semester, then you can apply, because the result awaiting it will be, so by the time all these exam gets over, you will be getting your degree. So then you can come and directly join for your PhD admission at ACTRIC. Okay, now
as I mentioned, so candidates who have done post-graduation course of only 1 year, they are eligible. Now, how much stipend you are going to expect? So if you clear ACTRIC entrance exam, then the stipend is going to be 31,000 plus 24% HRA. Now, HRA आपको तभी मिलेगा जब आप बाहर रह रहे होंगे. It means that you have not taken the facility of hostel at the ACTRIC. Okay. So the hostel facilities भी कैसी है? It's like first come first services. So if you come over there first and ask for the hostel, then only you get. Otherwise आपको फिर बाहर आपका arrangement करना पड़ेगा. So as far as I know, there are many places which is nearby to the ACTRIC. So there you can go and you can get the rooms also, like for both boys and girls. So many of my friends are staying outside. So it's not a big problem over there. So getting room on rent. Now application process. तो ये आपको कैसे करना है? So first of all, the site has been given. So that is your actric.government.in पे आपको जाना है, वहां पे आपको अप्लाई करना है. Everything is online over here. So इसकी फीस भी आपको सबसे पहले देनी है, which is around 725, and again it has to be online. So what you have to do is make a DD, okay, demand draft बनाइए in favor of TMC ACTRIC payable नवी मुंबई. एंड जब भी आप इसको भेजेंगे ACTRIC में, तो आपको इसके पीछे अपना नाम और एप्लीकेशन नंबर सब कुछ अच्छे से लिख के भेजना है. नाउ फॉर द फीमेल एप्लीकेंट्स एंड द SC ST, द फीस इज एग्जेम्प्टेड, आपको पे करने की जरूरत नहीं है. और जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको सेंटर का ऑप्शन आएगा. तो प्लीज फिल दोस 3 ऑप्शंस विच इज लाइक नियर बाई टू यू. अगर आपके एरिया रेड जोन में आ रहा है तो प्लीज उसको मत भरिए, दूसरी जगह पे भरिए, सो दैट यू आर एबल टू गो and reach and finally able to write the exam. So deadline for the application is 15 December. अब भी देर नहीं हुई है, अब भी आप कर सकते हैं. So please fill the application as soon as possible. So the exam is going to be online now. सब कुछ अभी online ही होता है. So that will be displayed in the last week of December 2020 on the ACTRIC side. So जैसे ही आप इसको अप्लाई कर दें, I'll suggest कि आप हर एक वीक में एक बार इसको देखते रहें. ACTRIC की साइट को हमेशा गो थ्रू करते रहिए, बिकॉज जैसे जैसे अपडेट होगा वैसे वैसे you will be informed like what steps to be taken. Okay, so the online exam is going to be on 9th January from 2 to 5 p.m. So again, there are different centers which is like located in Mumbai, Pune, Kolkata. So different 10 centers have been there, which is like covering the entire India. So you can go to nearby place or you can fill the nearby place where you can go and write the exam. Now, जिसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, they will be called for the interview. Okay, and that list of the qualified students will be uploaded in the ACTRIC website by February 2021. Now, कई बच्चों ने मुझसे पूछा है कि ACTRIC का सिलेबस क्या है. Actually, there is no defined syllabus of ACTRIC. Okay, आपका हमेशा इसमें क्वेश्चंस आपके 11th-12th से आते हैं, जो कि बेसिकली लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट्स पे रहता है. बायो जो रहता है आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहता है. सो इसमें डाउट आ जाता है कि अगर आपका ग्रेजुएशन माइक्रो में है, बायोकेमिस्ट्री में है या फार्मा में है, सो इस तरह से क्या होता है, आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो डिफरेंट हो जाता है. व्हाट आई से इज दैट बेसिक जो है, जैसे कि सेल बायो हो गया, जहाँ पे आपने सेल्स के बारे में पढ़ा है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, कैंसर, लाइक हाउ नॉर्मल फंक्शनिंग सेल बिकम्स कैंसर, उसके पीछे क्या पाथवे है, क्या प्रोटीन्स म्यूटेट हो जाते हैं, इस तरह के जो बेसिक लेवल का जो बायोलॉजी रहता है वो आपको स्टडी करना है. ठीक है. In the same way, many questions will be there, totally depending on the logical thinking and आपका analytical skill. So आपने कोई experiment किया है, एक टेक्निक है, तो उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है. ऑफ कोर्स टेक्निक आपसे कोई नहीं पूछेगा. So you need to know the principle behind it, and you need to have that analytical skill, like if that particular technique is given, how you're going to apply that technique in order to solve your experimental question. तो आपको जो भी prepare करना है वो आपके 11th-12th बेसिक्स से आप शुरू कीजिए उसको. If you ask me, like इसमें physics भी आता है, chemistry भी आता है, maths भी आता है. See, if I ask कि ये position यहाँ से यहाँ तक है, तो which is going to be the shortest pathway, so I will say the straight line. और आप घूम के फिर के जाइए, तो ये this will come under the physics also, but this is also common sense, right? So please be prepared in such a way that you don't have to justify yourself that ये physics हाँ इसे मैंने पढ़ा नहीं करके. Okay, so I'm telling you before itself, make sure your 11th-12th standard basic knowledge is good, it's clear, concepts are clear, and study the bio. Since you are MSc graduate now, you should know that bio level
bio of graduation level very well. So I wish all the best to all of you. Now, what are the eligibility? So for the direct interview, so already we have discussed, अगर आप MSc हैं, आपका 55% से आपका ज़्यादा marks है, then you're eligible to write the ACTRIC entrance exam for PhD. अगर आपको आपके पास CSIR, UGC, ICMR, DBT या किसी और फंडिंग एजेंसी से आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, तो आपको ACTRIC PhD एंट्रेंस नहीं लिखना पड़ेगा. यू विल बी डायरेक्टली कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस. ओके, इसके लिए भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा. उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा दैट यू हैव गॉट योर CSIR वैलिड वन, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर एंड स्कोर कार्ड वैलिडिटी ये सब पूछा जाएगा. ठीक है. नाउ फाइनली इफ सपोज एवरीथिंग गोज fine, goes correctly, and then the name of your, that is the candidates who are eligible or like who have cleared all the application process, they will be called by March 2021. So जैसे कि आपने अगर ACTRIC PhD entrance exam लिखा है तो by Feb 2021 आपको पता चल जाएगा. और जिनके पास CSIR है, they can directly apply and their name will be displayed by March 2021. Now interview dates. So finally when everything has been there, that ACTRIC entrance exam भी हो गया है, direct भी हो गया है, so the interviews will be conducted in June. So by June and May the display will be there, you will be finally called. Okay, now what is the important thing is that जैसे ही आपका नाम आ जाता है, like you have cleared your ACTRIC selection process, now the thing is that you will be called and there will be an orientation course. तो वहाँ पे क्या रहेगा, आपको let us say that 10 scientists are interested to take the PhD students. So they will mention their topic under which you are going to work. So you need to give your priorities. Okay, so that is like 1, 2, 3. So you can select this person, and the another person. So you have to give yours choice, your option, and then go and talk to each those scientists under whom you're interested. So talk to them, talk to their students, postdocs, or the working staff over there, ask them about the lab routine, how it is, what kind of work they do, what kind of publication they are having. So all these, it's your responsibility, go and ask. Now, if you're like, and the scientist interest matches, then you can join that particular lab. Okay, so the list of the JRF projects being offered to the PhD students at TMC will be displayed on the ACTRIC site in June 2021. So by the time all this process completes by July or August, you can join the lab and start working. Okay, so the candidates are invited to interact with and seek information from the principal investigators, the PI, whose titles and email IDs will be cited against their respective projects. So इसमें ऐसा नहीं है कि जब आपके पास लिस्ट आएगी तभी आपको जाके बात करनी है. If you already know that you are prepared and very much clear that you need to work under this scientist only, please go ahead, go and talk to that person. Okay, so you don't have to wait for the list to come. आप पहले ही जाके आप बात कर सकते हैं. जैसे ही आपका नाम ACTRIC की वेबसाइट पे आ जाता है that you have cleared the exam and you are eligible to do PhD in ACTRIC, so please आप जाइए, आप साइंटिस्ट से सीधा बात कीजिए. Okay, and finally the list of successful applicants will be shown on the ACTRIC site. So ये था आपका ACTRIC 2021 JRF का ऑनलाइन एप्लीकेशन. कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज एज सुन एज पॉसिबल आपको जो भी पूछना है पूछिए, बिकॉज टाइम बहुत कम है. 15 December 2020 is the last date for the application. So I hope you are taking this video as seriously and apply as soon as possible. Still any doubts are there, you are most welcome to ask, and if any suggestions are there, it will be appreciated. Thank you.